हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश का 4.3 सेजिंग द सी मॉन्स्टर इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं अपने चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चंस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है? थिंक एंड आंसर। उसमें फर्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर? आंसर इज द नेम ऑफ द नरेटर इज प्रोफेसर एरोनॉक्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शिप्स? आंसर, द नेम ऑफ द शिप इज द Abraham Lincoln. Third, at what time is the event taking place? Answer is, the event is taking place at night. Third question says, guess and write the meaning of the answer. As turn to port to the back and left side when you are facing the front of the ship. Cannons क्या है? One who fires the cannon. इंग्लिश वर्ड्स का आपके क्वेश्चन से उसमें फर्स्ट है, फ्रॉम द पैसेज फाइंड ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूजिंग टू डिस्क्राइब द मॉन्स्टर। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आंसर इज द एनिमल, द fearsome creature, unknown creature, a long blackish body, that internal beast, the motionless animal. Second, how long does the whole event described in this passage take? Work it out by reading the passage. Answer, the event take a long time from the night before till the next evening. Third question say, how did the battle between the shrew and the monster end? Find and copy the lines where you find the answer to these questions. Answer, when the ship was 20 feet away from the monster, Ned Land launched his harpoon. The weapon hit some hard substances. The electric light of the monster went out, and two enormous water sprouts crashed onto the deck of the frigate, spreading like a turret from the one end of the ship to the other. The troop crewmen broke spare masts and yardarms from the lashings. The hideous collision had occurred and the narrator was thrown into the sea. The battle ended there. Fourth question say, what attempts did the ship make to defeat the monster? Find out, find and copy lines from the passage. Describe the at least two of the attempts. Answer. In the first attempt, the cannoneer fires a shot but failed the target. Then an old beard gunner took a aim for a good while. The shell reached the target and hit the animals, but it bounced off its rounded surface. Second, in the second attempt, the Ned Land launched his harpoon hardly 20 feet away from the animals, but of no use. Two enormous waterspouts crashed and devastated the ships, and that attempt was failed. Fifth number question है, find the different units of measurement mentioned in the passage and get more information about them from the internet. तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे, मैंने यहाँ पर आपको उसका आंसर दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 6 है, फाइंड ऑल द वर्ड्स एंडिंग विद द सफिक्स लेस। उसके वर्ड्स है मोशनलेस, इमोशनलेस और टायरलेस। सेवेंथ क्वेश्चन से एक्टिविटी बेस मतलब लाइव इंग्लिश। यहाँ पर कोकण रेलवे का टाइम टेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर से आपको कोई कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, लुक एट द टाइम टेबल ऑन पेज 102। वेयर डू वी फाइंड सच टाइम टेबल्स डिस्प्ले? व्हाट इंफॉर्मेशन डू दे गिव? आंसर है, वी फाइंड सच टाइम टेबल एट द टर्मिनस ऑफ द रेलवे. They tell you the names of train from which station the journey of each train begins and ends, name of the station where they stop or do not stop, distance of the journey, timing of the arrival and departure of the trains. And they also give you the information about the facilities like STD booths, tea stalls,
refreshment room and resting rooms. Second A. Prepare and quiz your partner with the help of timetable using following questions type. तो नेम द ट्रेन नंबर, तो ट्रेन नंबर का नेम क्या है, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछे गए ये खुद आपको खुद से करने हैं, ठीक है, टाइम टेबल देख के। नेक्स्ट है थर्ड, अहमद लाइव इन पनवेल. He invites his cousin Saurabh. Saurabh doesn't know Marathi too well. He lives in Murdeshwar. So they discuss Saurabh's travel plan in English. Write their conversation using the timetable on page 102. सो आंसर टेलीफोन कॉन्वर्सेशन क्या है, सौरभ और उसके बीच में कॉन्वर्सेशन हो गया है, तो उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन दिया गया है। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है लिस्ट वर्ड रिलेटेड टू रेलवे बस जर्नी, फॉर एग्जांपल पैसेंजर्स, एडवांस बुकिंग, बोर्डिंग एक्सेट्रा। आंसर है रेलवे जर्नी, पैसेंजर्स, एडवांस बुकिंग, बोर्डिंग, लगेज, होल्ड ऑल द वाटर बॉटल्स, टूरिस्ट स्पॉट, टिकट चेकर, सीट, थ्री टायर रेलवे कोच, सेफ ट्रेवलिंग, लाइट ट्रेवलिंग, रिजर्व सीट्स, द फेयर। फिर नंबर क्वेश्चन से राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रेजेस इन द फॉलोइंग पेयर्स। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आंसर है अराइवल, डिपर्चर, उसके बाद रिजर्व, अनरिजर्व, सेकेंड, थर्ड है बोर्ड, गेट ऑफ, अलाइव, फोर्थ करंट बुकिंग, एडवांस बुकिंग, फिफ्थ गेट ऑन, गेट डाउन, और सिक्स अप ऑन और डाउन। सिक्स है डाउनलोड द टाइम टेबल ऐप ऑन योर पेरेंट्स मोबाइल with their permission from Play Store. Find the trains, the fare station, time taken for the journey, distance, the departure and arrival time, etc. with the help of app. So plan a railway journey for your family, friends using the app. तो आपको ये खुद से करनी है, ठीक है। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 7वीच्या मराठी, सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.